At the moment, let's move towards the fourth brief conference workshop. It is about contraception. Contraception or family planning means, as a doctor, it's our duty to educate newly married couples about contraception so that they can determine their number of children, spacing among their children. In this way, they will be able to give them proper time, proper education, and better future. For this sensitive topic, I would like to invite Dr. Zunaira Faiz. Thank you very much, Dr. Zunaira. She is my best friend, always encouraging and guiding me. Thank you very much for accepting our invitation on such a short notice. Please come and share your expertise with us. Bismillahirrahmanirrahim. Today, the topic of discussion is contraception. As far as contraception is concerned, we try to educate the married couples about the contraception, and also the women during labor, even during labor and also last trimester of pregnancy. It is the sensitive time where we can convince and motivate the women. And during antenatal period, we can convince and motivate and counsel married couples together for the contraception. What is contraception? The ability of individual couples to anticipate and attain their desired number of children and the birth spacing between the two child. It is achieved through use of contraceptive methods and the treatment of involuntary infertility. Birth interval recommendations. Recommended interval before attempting the next pregnancy is at least 24 months in order to reduce the risk of adverse maternal, perinatal, and infant outcomes. Recommendation for spacing after miscarriage or induced abortion. Recommended minimum interval to next pregnancy should be at least 6 months in order to reduce the risk of adverse maternal and perinatal outcomes. Family planning products. The products used in the family planning, maternal and child health. It includes injectables, Depo-Provera, Femiject, Novaject, very famous, IUCD, Protect 5, Safe Load, oral pills, especially emergency pills, and estrogen-progesterone combination pills, Novodol. Number 2, non-family planning products. These are general pharmaceutical products used other than the family planning. It includes Misotol, Vitaferol, Vical Plus, and Inofer. Planning methods offered by Green Star. Barrier methods, that includes condoms, that the different methods, the names are available of the condoms, Touch, Sati, and Do. And then the hormonal methods, COC, that is combined oral contraceptive pills, emergency contraceptive pills, Novodol, injectables, Femiject, Novaject, Depo-Provera, IUCD, Protect 5, and Safe Load. This is flow chart which gives the classification of the family planning. On the one side is the natural method that includes the erectation and withdrawal method. On other side, that is the modern methods, which includes the temporary and permanent method. In the temporary method, we have hormonal and non-hormonal method. In hormones, we have injectables, pills, and implants. Pills include contraceptive, that is the combined contraceptive pills and progesterone-only pills. Injectables, that includes the Noriject and Depo-Provera. In implants, that is Norplant, Implanon, and Sino2. Non-hormonal methods, that include the barrier methods, and IUCDs. In barriers, that includes the condoms both for the female and the male, and spermicide foam and jelly. IUCD, that includes the copper T, multi-load, Gynefix, and Merida. Comparing the effectiveness of both the birth control methods, this chart, it gives the comparison between the different methods of the efficacy. Pearl index, it is we use this term for comparison of the effectiveness of the different methods of the contraception. Here you can see more effective, that is above it is given the vasectomy, female sterilization,
And then the natural methods, that is the lactation, and again pills, injections, ring and patch, and then male condoms, diaphragm, female condoms, cervical cap, sponge, and fertility awareness-based methods. And last, that is the withdrawal and spermicide. Injectables, these are the different preparations of available. The green star here, Depo-Provera, Femiject, oral pills, that is the ECP, Novodol, emergency pills, IUCD, that is Safe Load, and Protect 5, that is Protect 5, it is for 5 years contraception. Oral pills, ECP, and emergency pills, Novodol, and emergency pills, we should advise the patient that she cannot use it more than 2 times in a month. Combined oral contraceptive pills, that is Novodol. Composition, it includes both the levonorgestrel, ethanostradiol, and ferrous fumarate 75 mg, that is the iron pills. And then it is available in the pack of 28 tablets, 21 white tablets, and 7 brown tablets. Novodol benefits are it protects against the risk of pregnancy, cancer of lining of the uterus, that is endometrial carcinoma and ovarian carcinoma, symptomatic pelvic inflammatory disease, ovarian cyst, and iron deficiency anemia. Combined hormone contraceptive work as contraceptive before fertilization. Both hormones work adjunctively as follows. Thicken the cervical mucus to prevent the sperm penetration into the female upper genital tract, block the luteinization hormone surge, and thus inhibit the ovulation. Inhibit the capacitation, that is the process in which the spermatozoa, after it reaches the ampulla of the fallopian tube, undergoes a series of changes that leads to its ability to fertilize an ovum of the sperm, which limits the sperm's ability to fertilize the egg. Slow tubal motility, which may delay the sperm transport, disrupts the transport of the fertilized ovum, induce endometrial atrophy, and change underlying vascular function and structure. When to start? Anytime, if she can reasonably sure the client is not pregnant from day 1 to 5 of the menstrual cycle. In postpartum, that is just delivered cases, after 6 months if using the lactation amenorrhea. That is, if the woman is lactating, then she can start after the 6 months. And the next is after 3 weeks if not breastfeeding. Post-abortion, immediately or within 7 days, she can start. Take 1 pill each day, preferably at the same time of the day. Take first pill on the 1st to 7th day, usually first day of the menstrual cycle. It is prescribed after the beginning of your menstrual period. Patient is advised. Composition. Each tablet contains levonorgestrel, that is 0.75 milligram, and indication is it can be used within the 120 hours after any unprotected coitus, sex was forced, or the rape cases, contraceptive mistakes like condom rupture, spillage, male failed to withdraw 3 or more than 3 missed contraceptive pills, expelled, displaced IUCD, any mismanagement of the natural method of family planning. Mode of action of the levonorgestrel is synthetic hormones similar to the natural progestins. It acts as follows. It inhibits or delays an egg from being released from ovary if taken before ovulation. It also prevents the sperm and egg from uniting, thus preventing the fertilization. It also inhibits a fertilized egg from embedding into the uterus. Side effects are the nausea, pain, fatigue, headache, and breast tenderness, dizziness, vomiting, monthly bleeding, starts early or later than expected. Women who may need emergency contraception. Women who have unplanned, unprotected coitus, used a condom that may have leaked or broken, that is, missed multiple contraception, that is, pills or progesterone-only pills, and late for the injectables. Failed in using the withdrawal method of contraception. Precautions are not more than 4 tablets, that is 2 doses allowed within a month, effective only for the emergency contraceptive, not reliable as a regular planned contraceptive. The emergency contraceptive pill is not as effective for the women who weigh more than 70 kg. And for these women, a copper IUD, it is recommended. Pregnancy, liver, and biliary tract diseases, past history of jaundice, undiagnosed abnormal genital bleeding, they are the contraindications.
Then is the injectable contraceptive. That is, you see, Femiject. It is 1 month ampule for the contraception, northestrone and enthate plus estradiol valrate, and it is 1 ml ampule contraception. It protects for 1 month, as I told you before. And dosage is, first dose should be given on the first day of the woman's natural cycle. That is the first day of the menstrual bleeding, starting on the day 2 to 5 of the menstrual cycle allowed, but a barrier method is recommended in addition for the first 7 days after the injection. The second dose repeated at interval of 30 plus minus 3 days. That is the minimum of the 27 days and maximum of the 33 days interval, regardless of the cycle pattern, for the next 1 month protection if required. Intramuscular given in the arm or buttock. Then is the Noviject. Again, it is combination of the northestrone and enthate and estradiol valrate, 200 milligram and 1 ml ampule, and hormone contraception is protection for 2 months. Dosage, first dose should be given within first 5 days of the woman's cycle, not later than 5 days or 3 weeks after childbirth, if not breastfeeding. The next dose repeated after every 8 weeks for the next 2 months protection if required. Intramuscular in the arm or the buttock. Dipoquin, medroxyprogesterone acetate, 150 milligram per ml of the medroxyprogesterone acetate, 1 ml ampule, contraception for 3 months. Gynecology, that is treatment of endometriosis, menopausal vasomotor symptoms, it is also used. Dipotone medroxyprogesterone acetate, when administered at the recommended dose to the woman every 3 months, inhibit the secretion of the gonadotropins hormones, which in turn prevents the follicular maturation and ovulation and results in endometrial lining. Client instructions, that is, return to the health clinic for an injection every 3 months or every 2 months. Change in the menstrual bleeding patterns are common. It does not give the protection against the STI and hepatitis B infection, AIDS, and other HIVs. Dosage, day 1 to 7 of the menstrual cycle, anytime during the menstrual cycle when you can be reasonably sure the client is not pregnant. Postpartum, immediately or within 5 days of the postpartum, if not breastfeeding. If exclusively breastfeeding at or after 6 weeks of the postpartum, after 6 months if using lactation method. Post-abortion, immediately or within 7 days. The next dose repeated after every 12 weeks or the 3 months protection if required. Intramuscular given in the arm or the buttock. Injectables, contraception, against the precaution is, that is, shake injection before use, not for subcutaneous injection. Injected immediately after its withdrawing, after its drawing up into syringe. Contraindication, new mother can use after 6 weeks of childbirth. Avoid in known or suspected pregnancy, undiagnosed vaginal bleeding, severe liver dysfunction, non-hypersensitivity to any component of the drug, diabetic, any type of malignancy, and cardiovascular disease. And this is IUCD, intrauterine contraceptive device. It is highly safe, effective form of the long-term reversible contraception for up to 5 to 10 years. With some exceptions, IUCD, they are safe and suitable for nearly all women of the reproductive age. It can be used by a breastfeeding mother and those doing hard physical work, and unprotected intercourse also it can be used. Benefits, highly effective, most effective immediately, long-term method, that is reversible method, no interference with intercourse, immediate return to the fertility upon removal, no hormonal side effects, no need of regular follow-up, no supplies needed by client, inexpensive, that is, it does require additional cost or visit to the provider once IUCD inserted. Safe load, it is for 10 years of child spacing. It's a copper containing device. Indication is intrauterine contraceptive for 10 years protection, and price is written over there. Protectant 5, it is an IUCD for birth spacing of the 5 years. Again, it is of copper 375, it's its strength. Indication is it is for 5 years protection.
Mode of action, again, it causes thinning of the lining of the uterus and fallopian tube, then thickening of the cervical mucus, and then inhibition of the sperm movement and ovulation, of course. At any time during menstrual cycle, if the woman is non-pregnant, preferably during or immediately after menstruation, inserted by the expert doctor in the uterus within the first 48 hours postpartum, but special training required for insertion at this time. Safe load replaced every 10 years, N5 replaced after 5 years. P5 it replaced after 5 years. If necessary, remind your doctor for the replacement. If you wish to become pregnant, remove safe load after 5 years under medical supervision. That is, we can remove it whenever they want pregnancy. May be used in breastfeeding women, inserted only under medical supervision. Safe load replaced after 10 years, and P5 replaced after 5 years. Contraindication: avoid in established or suspected pregnancy, intrauterine and ectopic pregnancy, genital infection, except candidiasis, PID, allergy to the copper, that is Wilson's disease, and malignant diseases, vulval diseases. It's contraindicated. This is the misotol communication tool, and this is something is talking about the misoprostol. Thank you. Thank you. It is always, देखिए risk is always there. We cannot say अगर अच्छे हाथों में भी रखा जाए तो चांस तो है ना, 0.01% risk is there. क्योंकि जैसे पर्ल इंडेक्स यही कहता है ना कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर पर 100 वुमेन ईयर्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन, तो हमने जब उसका वे आउट करते हैं कि हर चीज़ का उसका प्रॉन्स एंड प्रोन्स तो होता है, कॉन्ट्रासेप्शन हर मेथड का अगर फेलियर भी देखा ले, लेकिन बहुत कम है, लेकिन है वो तो है, लेकिन ये IUCD मेरा ख्याल है जितने भी हैं मेथड्स में इनमें बेहतर समझा जाता है. वैसे मैं खुद अपनी प्रैक्टिस में IUCD को आई रिकमेंड, स्पेशली जो लैक्टेटिंग मदर हैं, या अगर सही अच्छे हाथ में रखा जाए और PID को उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए तो आई थिंक IUCD इज़ वेरी गुड. IUCD itself causing PID. वो खुद नहीं, अगर हम कहें कि चूँकि देखिए फॉरेन बॉडी तो है, इट इज़ फॉरेन बॉडी, लेकिन अगर हम ये देखा जाए कि जी अब इसकी वजह से हो गया इन्फेक्शन, तो कई दफ़ा वुमेन की ऑलरेडी अंडरलाइंग साइलेंट इन्फेक्शन चल रही होती है जो कि मैनिफेस्ट होती है जब फॉरेन बॉडी अंदर आ गई. मैडम, ये जो प्रोजेस्टिन्स हैं इंट्रामस्कुलर, उनको लॉन्ग टर्म बेसिस में देते हैं, तो इसके साथ ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपेनिया के कितने इंसिडेंसेस हैं? ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियो देखिए वो तो होता है ना जो आपने बताया, लेकिन प्रोजेस्टिन मैं वैसे इसको फेवर नहीं करती. प्रोजेस्टिन्स जो है ना इसके ब्लीडिंग के बहुत ज़्यादा है, इरेगुलर PV ब्लीडिंग बहुत कम ये पेशेंट्स को सूट करती है. और बाकी जो आप ऑस्टियोपोरोसिस की बात कर रहे हैं वो तो ज़ाहिर हम एड बैक तो देते हैं, कैल्शियम तो देते हैं सबको. जी पोस्टमार्टम में आपने बताया कि आफ्टर 6 मंथ्स आपको 6 मंथ्स में कितने % चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी होने के? 6 मंथ क्या, अगर वो लैक्टेशन कर रही है, अगर हम उसको सिर्फ लैक्टेशन पे छोड़ दें तो वो हम नहीं, वी हैव टू यूज़ दी, जैसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है तो फिर तो हम 3 मंथ्स to 6 मंथ तो चलें, वी कैन क्या, लेकिन उसके बाद तो डेफिनेटली शी नीड्स टू हैव सम कॉन्ट्रासेप्शन. बैरियर मेथड्स बहुत अच्छे हैं उसके लिए. उसमें कोई एक्सक्लूड करने के लिए कि प्रेगनेंसी नहीं है जरूरी है या कि हिस्ट्री से? नहीं वो तो करनी चाहिए, प्रेगनेंसी टेस्ट तो हमेशा करें. तो सर देखिए कंडोम जो है वही है हमारे इधर जो प्रिवेल, और बाहर के कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ तो स्पर्मिसाइडल वो, लेकिन वही बात आ जाती है, ये मोटिवेशन की बात होती है. अगर मोटिवेशन है तो कंडोम भी सक्सेसफुल है, अगर नहीं है तो फिर वो भी नहीं है. वॉज़ेक्टमी तो बहुत दूर की बात आ जाती है ना, इन्फेक्शन हो जाता है ना बेटा, उससे PID के चांस बहुत ज़्यादा है. हमारे इवन हमारी गायनी प्रैक्टिस में हम देखते हैं PID कितना कॉमन है, ठीक है ना, तो इसलिए यूजुअली मेनली नहीं यूजुअली देखिए कहने की बात है ना, लेकिन ये कितनी फीमेल्स को उनको एजुकेट किया जाए तो फिर कहीं वो कामयाब रखने की जो वो होगा उन्हें, नहीं उसकी तो बहुत कम है. हाँ जी, वैसे भी अगर मेल कॉन्डोम्स को भी देखें तो ये कहते हैं जी रप्चर हो जाएगा, ये हो जाएगा वो, लेकिन ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं. अगर आपके अंदर मोटिवेशन है टू हैव कॉन्ट्रासेप्शन तो वाकई वो कामयाब मेथड हो जाता है. दूसरा चीज़ जो ये था कि जब मुझे इस ये लेक्चर वगैरह का कहा गया तो मैं एक मैसेज ज़रूर साथ, यानी आई वांट टू से कि अगर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड अगर अच्छे तरीके से अगर यूज़ करा लिए जाएं, पब्लिक से मोटिवेशन हो जाए, उनकी काउंसलिंग हो जाए, तो ये जो एबॉर्शन की जो डिमांड है
क्लिनिक्स में आए दिन जो लोग ख़वातीन आ रही होती हैं, कपल्स आ रहे होते हैं, पढ़े लिखे, सोफिस्टिकेटेड, सो कॉल्ड, दे नो द शरिया आल्सो, तो ये सारे एलूड हो जाएंगे। ये कॉन्ट्रासेप्शन नहीं करना, लेकिन जो ही प्रेगनेंसी हो जाती है वो इतने, अगर वो कहते हैं ना डिलीवरी एंटीनेटल के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन एबॉर्शन के लिए कहाँ से आ जाते हैं, और किस तरीके से वो लेडी डॉक्टर को फोर्स कर रहे होते हैं कि ये डॉक्टर साहब है। मुझे अभी पिछले दिनों जो बहुत दुख हुआ, मैं ये समझती थी, आई नो मैनी केसेस लाइक दैट, कि जी शी इज़ कंपेलिंग मी कि जी ये तो शरीयत में है जी, वो अच्छी खासी, आई मीन आई कैन नॉट डिफरेंशिएट, कि वैसे लग रहा था वो शी नोज शी बिलोंग्स टू गुड फैमिली और अच्छी खासी पढ़ी लिखी, इंजीनियर लेवल की पढ़ाई की हुई, और शी वाज इन्फोर्सिंग कि जिन इट ये शरीयत में है तो भाई जी जितने तेनों है यू कैन गो देयर। लेकिन ये ऐसी चीज़ें हम लोग, ये फैमिली प्लानिंग के जो मेथड्स हैं हमारे पाकिस्तान, हमारे इसमें क्यों इसका फेलियर रेट ज़्यादा है, इसलिए है कि एक तो नॉलेज नहीं है ये जी, उसके लिए ख़ातून जो है वो कोशिश कर रही होती है, इंतज़ार कर रही होती है कि मेरी सास साथ जाए या जेठानी जाए या दरानी जाए, और जो मियाँ जो होता है वो भी चल हूँ चला जाऊँगा, कल देखी जाएगी। बट लेकिन इस आजकल में, बल्कि मैंने इसलिए शुरू में कहा था कि 3rd ट्राइमेस्टर में ही ख़ातून को ख़ुद मोटिवेट किया जाए। मैंने एक बहुत अच्छी हाई फाई किस्म की CME अटेंड की, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। उसमें जब मेल को कहा गया, मेल गायनेकोलॉजिस्ट बड़े अच्छे, बड़े वेल फेमिलियर बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा ये हेडेक प्रेगनेंसी का है ही फीमेल का। जब प्रेगनेंसी का हेडेक फीमेल के सर पे है तो फीमेल को खुद भी, मैं तो अब ख़वातीन को कहती हूँ कि जो ही आपकी डिलीवरी हो, बल्कि होने से भी पहले अपने जहन में रखो कौन सा मेथड यूज़ करना है, और आप अपने आके क्लिनिक में आप करवा के जाओ। चाइल्ड स्पेसिंग से ही हमारी जो माँ की सेहत अच्छी होगी, माँ की सेहत अच्छी होगी तो वो बच्चे को भी अच्छे तरीके से देख पाएगी, और घरों में ये लड़ाइयाँ और तलाक की और ये इस किस्म की नहीं होगा। और इसलिए जैसे इसमें इन्होंने जो हमें इसमें जो मेथड में जो इन्होंने शुरू में डेफिनेशन बताई हुई है कि जी कब जो जैसे भी डॉक्टर साहबा ने भी बड़ा अच्छा जिक्र किया कि जो न्यूली मैरिड कपल, न्यूली मैरिड नहीं, जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनको भी ज़रूरत है इसकी, और ये मीडिया पे आना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि इस चीज़ की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि अनसेफ अबॉर्शंस हैं, इलीगल सेप्टिक अबॉर्शंस हैं, और मटरनल मोर्टेलिटी है। और वो जो बैक स्ट्रीट में अगर फ़र्ज़ किया अबॉर्शन हो गया और उसके बाद पेरिटोनाइटिस हो गई, PID तो वो तो बड़ी अगली बात है ना, पेरिटोनाइटिस हो गई और उसके बाद फिर उसकी डेथ हो गई, वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसको छुपा दिया जाता है, उसको डिस्गाइज कर दिया जाता है किसी और मत। लेकिन ये चीज़ अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अगर राइट टाइम पे सही जगह अगर अप्लाई हो जाएं, इफेक्टिवनेस इनकी काफ़ी है, और वाकई चाइल्ड स्पेसिंग भी होगी और सब कुछ हो, ये तो हमारा ईमान है। लेकिन जो बड़ों को ये कहते हैं ना कि बच्चे देखें, मैंने यही कहा चाइल्ड स्पेसिंग करें, उसके बाद जो वो आगे आ जाती है कि अबॉर्शन, वो नहीं। मैंने ऐसे कपल को भी देखा, प्रेगनेंसी हो गई, अबॉर्शन, दूसरी फिर अबॉर्शन, ये क्या बात है? ये तो, और सबसे ज़्यादा खातून को मोटिवेशन ज़्यादा आनी चाहिए, मजबूत विल पावर, ये ख़वातीन के अंदर विल पावर होनी चाहिए, उनके सिलेबस में देना चाहिए। ये हमारे जो सेकेंडरी स्कूल से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में दे शुड बी टॉट अबाउट दिस। ये, और जब शादी होती है निकाह नामे से पहले ही उसके अंदर ये मेंशन होना चाहिए, एंड बोथ हस्बैंड वाइफ दे शुड बी टॉट अबाउट दिस। अगर आप भाई सऊदी अरबिया जाए, मैंने वहाँ बहुत अच्छा काम किया एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, वहाँ पे सुभान अल्लाह हर चीज़ उनको मेंशन की जाती है। उनके जैसे सिकल सेल डिजीज़ है, जो उनके दूसरे 2-3 आपको पता है जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, वो उनके पहले ही उनकी टेस्ट करवा के, और फिर तो ये तो टेस्टों तक बात है ना। क्या कॉन्ट्रासेप्शन की ये चीज़ वो इम्पॉर्टेंट नहीं है? फैमिली जो है इंपॉर्टेंट है। ये ज़रूरी है कि इस तरह के इश्तिहार है कि घराने की चाबी भी तुम संभालो और उसकी भी संभालो, ये ख़ुद पता होना चाहिए कपल्स को हु आर गोइंग टू मैरी, जो कि घर बनाना चाह रहे हैं, एक माशरा घर से बनना है। देखिए डॉक्टर साहब, वो तो आप तो माशाल्लाह खुद भी जानती है पॉइंट, तो वो तो अक्सर देखा गया कि बच्चा हाथ में IUCD पकड़ के बाहर आ रहा होता है, डिलीवरी हो रही होती है, वो तो हमने ऐसे तो देखा है ना। डॉक्टर साहब वही बात आ जाती है कि अगर फ़र्ज़ किया, कई दफ़ा ये भी आपकी बात से ये फोबिया हो जाता है कि नहीं डॉक्टर साहब मैं तो IUCD रखवाई सी और उसमें हो गया। मेरे पास एक जापान से ख़तून आई, तो लेकिन फिर ऐसों को ये है कि उन्हें मोटिवेट, वही बात काउंसलिंग बिठा के, और दूसरा कई मेथड ऐसे हैं। बाकी जो इम्प्लानॉन वगैरह के हमने ग्रीन स्टार की जब हमने ट्रेनिंग की थी तो इम्प्लानॉन ये भी हमने रखे, जिडाल भी रखा, लेकिन अगेन इनकी जो PV स्पॉटिंग और ब्लीडिंग के जो है ना वो ज़्यादा आए कि इरेगुलर ब्लीडिंग के, हाँ वो इस तरह के केसेस थे। लेकिन मैंने देखा अगर सेफ हैंड अच्छी एजुकेटेड अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर से रखा जाए तो उसके चांसेस कम होते हैं।